M- Ma'am, good morning. Good Good morning. morning, ma'am. So, how are you all? Good. Good, ma'am. So, I hope you were able to attempt Precis Writing. So, I received the write-up only for few students. What about the rest? All right, students. So, today we are going to take a look at the solutions for the same, right? So, जैसे ये क्योंकि language है, so इसमें एक solution नहीं हो सकता, right? There can be multiple solutions. So, what you may write, what I may write, what your friends may write will all be different. All right, so let's take a look at what solutions we have here. So those of you who had sent it, I couldn't check them right now. So आज मैं पक्का check करके आपको send करूँगी, right? So I have not seen them yet. All right, so we went through the rules, what rules you need to follow. And this was the practice passage. So this was about machines, as you told me, right? How we are dependent on machines for everything that we do, from waking up to our breakfast to reaching our place of work, right? And then even for our schooling, learning, entertainment. So जैसे बच्चे इधर आप देखोगे ना, notice करोगे. So what method I follow? See, now you read it, you got to know कि इसके main points क्या है, main ideas क्या है, right? After that you can just, you know, इसके जो इतने sentences है, see, you wake perhaps to the hoot of a siren, you wash in water brought to you by the aid of machinery, heated by machinery, placed in basins for your convenience by a machinery, you eat your breakfast quickly cooked for you by machine, go to school in machines made for saving leg labor. If you're lucky to be in a very modern school, you enjoy cinema where a machine teaches you, or you listen to lessons broadcast by one of the most wonderful machines. Right? So जैसे अभी हम Zoom, लैपटॉप्स, अपने स्मार्टफोन्स पे क्लास लगा रहे हैं, right? So ये जो सारे हैं, ये different examples किस चीज के हैं? They are simply examples for how we are dependent on machines, right? So आप इसको condense करके एक single sentence में भी डाल सकते हो. We are dependent on machines for everything, including our getting up in the morning, breakfast, reaching place of work, learning, studying, right? Entertainment. ठीक है, तो आपने देखो सिर्फ इसके आपने एक एक सेंटेंस के लिए सिंगल सिंगल वर्ड दे दिया. इसका वेकिंग अप हो गया, then even for getting ready, breakfast, reaching your school or place of work, right? Or for education and entertainment, right? So इसमें आपने सबको एक सेंटेंस में डाल दिया, तो इसी से आपका कितना कट शॉर्ट हो गया. एंड एंड में आप लिख सकते हो जैसे ये वाला कि सर्टेन राइटर इमेजिन द टाइम. सो आपको ये इसमें जाने की जरूरत नहीं है. You can simply say this like this dependency on machines has led to the fear that one day machines will become the master of men, right? So that is how you can just wind it up with one single sentence there.
All right. So I was checking your passages. So one of you has written it really well. And now let's check this solution. So the title is Man and Machines. Make sure you give a title, otherwise you will lose 2 marks, right? So either देखो, machines have become slaves of modernity as they do all the jobs humans do not want to, right? So we do not want to, walk to our school or walk to our college, right? We do not want to, let's say कि हम पूरा स्क्रैच से अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करें, हम ऐसे नहीं करना चाहते। हमें क्या है कि चलो if any of you are fond of eating oats or cornflakes, so वो एक रेडीमेड चीज है, आपने सिर्फ उसको दूध में डाल के खाना है। दूध को आपने माइक्रोवेव में गर्म करना है, अगर आप गर्म करते हो, राइट? या गैस पे गर्म करना है। वो पुराना टाइम तो नहीं रहा कि आप यू आर अरेंजिंग फायरवुड, देन आप उसको मतलब यू आर लाइटिंग अप अ फायर टू गेट द हीट। So our life has become much simpler, much easier, much faster due to machines. Right now, so every task we undertake, machines have a role to play in that, right from waking up, eating, going to school, and studying. No doubt, few people fear that machines might one day end up ruling us due to our dependence on them. Right? So इसको तो हम और भी शॉर्ट कर सकते हैं, ये फिर भी मैंने लास्ट वाली लाइन थोड़ी सी लंबी लिख दी, बट आप देखोगे यहाँ पे कितने सेंटेंसेस थे, हमने उसको रिड्यूस करके बिल्कुल 1/3 बना दिया, राइट? Yes. So now we have another practice passage. So I want you to attempt this passage right now and send me your write-ups right now so that I can tell you how we can make it better. So पहले मैं इसको आपके लिए रीड कर देती हूँ। आप सभी अपना पेन पेपर साथ में ले लो and make sure you write the basic points. So everybody knows what a good man means and how he should be. Our definition of a good man is the one who does not smoke or drink or avoids the usage of bad language. A good man is ideally expected to converse in front of men as he would in front of women. He is also expected to attend the church regularly and have correct opinions on all subjects. He has a wholesome horror of wrongdoing and realizes that it is our painful duty to reprimand sin. He is not anticipated to have wrong thinkings and has the authority to protect the young. His duties are not just restricted to the professional front, but also needs to spend quality time doing good deeds. He must be patriotic and a keen believer of military training. He should promote industry, must be sober and have virtue among wage earners and their children. He must be a role model for all, and it is expected that he leads a way which the younger generation would willingly follow. Above all, of course, his morals in the narrow sense must be admirable. So, okay, tell me what is the basic idea being discussed here? Yes, students. हाँ जी, अमरिंदर, परमप्रीत, Shweta, Prabdeep. Wonderful, Samuel. Yes. So basically, qualities of a good man. That is what is being discussed here. Right? So now that we know what is being discussed, and आपने देखा होगा कि सिर्फ उसी के ही मल्टीपल एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि उसको क्या करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, राइट? सो आप इसको अगेन यू कैन जस्ट कट शॉर्ट दिस होल थिंग, ऑलराइट? आप इसमें से कुछ कीवर्ड्स ही उठाना, आपको जरूरी नहीं है कि आपने पूरा सारा कुछ ही बताना है। चाहे आप इसको भी कंडेंस करके ट्राई करो कि आप एक ही सेंटेंस में सारा लिख दो, सारी क्वालिटीज ना कॉमा डाल के उसमें ही सेपरेट कर दो। a good man should be well spoken, right? Religious, जैसे चर्च वाले का religious हो जाएगा, क्योंकि इसी में आ जाएगा पेनफुल, ये वाला हॉरर ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड पेनफुल ड्यूटी टू रेप्रिमांड सिन। ठीक है, इस सब का आप एक सिंगल वर्ड में पूरा इस लाइन को या आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट? Yes, title a good man is again very simple title and also short. चलो बच्चे, so should I give you 10 minutes? I think 10 minutes would be enough, right? So, Yes, ma'am. okay, so get to work and attempt this. In the meantime, I will check your passages for yesterday. जो आपने कल भेजे थे ना, वो मैं अभी check करके I'll get back to you.
All right, students, I hope you're not facing any problem while attempting it. So just let me know in case you feel you are getting stuck somewhere. All right, so I hope you have been able to finish. I received from Amandeep and Dharampreet so far.
So Dharampreet, I did reply to you, so make sure you check that. So Amandeep, you have also written it well. Thank you, ma'am. Okay, so now let me check Shweta's. So Shweta, about the one you wrote yesterday. Shweta, I hope you are listening. Yes, ma'am. ओके तो बेटा जो आपने कल मुझे भेजा था ना उसमें फॉर सेविंग टाइम नाउअडेज मैन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मशीन्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग राइट देन अ फुल स्टॉप तो आप ये चाहे मत लिखो कि आर Yes, मोस्ट ma'am. एक्टिविटीज आर डन बाय मशीन्स क्योंकि ये सेम ही चीज रिपीट होगी ना ये वाली लाइन आप काट सकते हो एंड देन द Okay, फियर ma'am. बिगिंस दैट वन डे वी माइट बी स्लेव्स ऑफ मशीन्स एंड देन द फियर बिगिंस ठीक है जी Okay, तो ma'am. अदरवाइज आपने काफी अच्छा लिखा है अगर आप इसमें डालना चाहते हो यू कैन राइट दैट फॉर नाउ डेज फॉर सेविंग टाइम वी completely डिपेंड ऑन machines फॉर आवर ब्रेकफास्ट गेटिंग रेडी कम्यूटिंग ठीक है जी कम्यूटिंग वर्ड यू कैन यूज दैट यू नो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय जैसे हमने कहीं जाना हो लाइक यू हैव टू ट्रैवल टू वर्क ट्रैवल टू योर let's say college or school so you can use this word commuting. Okay, ma'am. दिस इज ऑल्सो गुड जो आपने गुड मैन का भेजा ना हेल्प्स नीडी पीपल ठीक है पीपल्स नहीं आएगा एंड हेल्प्स आएगा पीछे एस आएगा हेल्प के साथ सो लेट Okay, मी ma'am. नाउ चेक फॉर सैम्यूल एज वेल सो सैम्यूल आई होप यू आर लिसनिंग हाँ जी सैम्यूल आर यू इन द क्लास Yes, ma'am. ओके सैम्यूल तो आपका जो कल वाला था so you can simply say machines do a lot of work and we are dependent on machines just yeah directly start kar do nowadays we are dependent on machines for every little task that we do right from breakfast getting ready commuting studying this has led to the fear that one day machine will become master of humans just as humans are master of machines today ठीक है ये लास्ट लाइन आपकी ठीक है बस शुरू में आप एक तो ये थोड़ा से वन सिंगल वर्ड में इंक्लूड कर लो प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट दिस दैट राइट and Okay, about ma'am. today's let me read today's as well so this is also good man should be religious and abstainer silver tongued benevolent sober a good road it would be a good role model for all and should have admirable morals ठीक है जी Okay, तो ma'am. ये भी आपका ठीक है बस आपने टाइटल नहीं मेंशन किया टाइटल मत भूलना बिकॉज उसी में यूजली हमें ना भूल जाता है टाइटल इसका मेंशन करना है उसमें फिर मार्क्स कट जाते हैं Okay, ma'am. सो फिरोज नाउ आई एम चेकिंग योर्स ओके फिरोज सो अबाउट योर फिरोज एम आई ऑडिबल Yes, ma'am. ओके बेटा जो कल आपने भेजा था ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी machines play a very important role in our life Yes. so you can say to save time we get the machines to do most of our work ठीक है तो फिर आप लिख सकते हो
since we are so dependent on machines, there is this fear that one day machines will be ruling us, right? Or we will become slaves to the machines. ठीक है, आप Yes, चाहिए किचन वाला, कुकिंग वाला, आप चाहे लाइन छोड़ दो, क्योंकि फिर इससे आपके वर्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं. yes, सिमिलरली जो अभी आपने लिखा ना, इसमें भी आप एक लाइन में ही सारा लिख दो. देखो पेनफुल तो नहीं इधर आएगा. यू कैन सिंपली राइट ही इज रिलीजियस एंड रिस्पेक्टफुल, कॉमा knows his duties, कॉमा is hardworking. ठीक है, अभी ये knows what is right and wrong आपको फिर से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये रिलीजियस में ही कवर हो जाएगा, knows his duty में ही कवर हो जाएगा. ठीक है जी. yes, ma'am. So ये वाला भी आप you can miss out on this one. All are equal and not discrimination, and he does not discriminate, right? तो आप इसको भी skip कर सकते हो, आप सिर्फ simply लिख सकते हो he has all the good qualities, right? Or he has all the desired qualities. So उससे आपका काफी Okay. शॉर्ट हो जाएगा. एंड मेक श्योर आपने टाइटल दिया हो. टाइटल में आई थिंक दिया नहीं आपने. So now let me check for Arun. Yes, Arun, you have written well, right? Everybody knows the definition of a good man. Someone who does not have any bad habit, is always has faith in God. या आप बेटा इसको ये भी लिख सकते हो, is religious and does good deeds, right? Is a role model for the youth. Above all, his morals in the narrow sense must be again above all he has admirable morals, rather than कि आप पूरी वही वाली लाइन लिख दो. ठीक है जी, उसको आप और शॉर्ट कर सकते हो अरुण. So and let me check for Altaf as well. बेटा अल्ताफ, यू कैन, आप शुरू वाली दो लाइन स्किप कर सकते हो. यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम अ गुड मैन डज नॉट स्मोक, ड्रिंक and avoids bad language. He is a religious person. He also is a role model for many, and his morals must be admirable, right? Yes, ma'am. And now let me check for, so I've received another one but I don't know the name. ये अभी black ink में किसने भेजा है? So the characteristics of good man are prejudicated and is expected to be a non-smoker, non-drinker, and avoid usage of bad language. Ideally expected to be a religious man. He does not have wrong thinking and away from the path of sin. He is expected to be a role model for young and must be admired and praiseworthy. So बच्चे yes, तो yours is also right. ये वाला अभी जो किस भेजा है, the number ends with 761. So 761 कौन है अभी? अमरिंदर. So बच्चे इसमें थोड़ी सी चेंजेस आप कर सकते हो. That you can directly start with a good man is expected not to smoke, not to drink, and avoid bad language. फिर also he is expected to be religious, have correct thoughts or correct opinions, and he is and to be a role model for the youth. ठीक है, आप ऐसे जैसे कॉमर्स डाल के you can even shorten it further. He must be admired and be praiseworthy, right? So काफी करेक्ट है, सिर्फ थोड़ी सी ग्रामर की मिस्टेक है. एंड एक आप थोड़ा सा कॉमर्स डाल के उसको और शॉर्ट कर लो. So now let me read Parampreet's.
यस परमप्रीत ऑलमोस्ट गुड, आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट चाहे और कर लो. A good man is one who doesn't drink, smoke and avoids abusive language. He attends the church regularly. ठीक है बेटा, इसमें ना attends आएगा. हम जब भी सिंगल उसके साथ जैसे सब्जेक्ट सिंगल है ना, ही एक पर्सन है, तो जो वर्ब यूज करते हैं ना उसके पीछे एस लगाते हैं. ही अटेंड्स द चर्च रेगुलरली एंड स्पेंड्स हिज क्वालिटी टाइम डूइंग गुड डीड्स. He never disrespects women or any other person. He has the authority to protect the young. He is physically fit and a role model for others. Again, this is also good. So I am feeling quite, happy that आपको point समझ आ गया and you have really done well. So Arun, why people use tough word? I don't know. So that is everybody's personal choice, right? So for this lecture, Dharampreet, Amandeep, Shweta, Firoz. ओके श्वेता का भी मैंने रीड करना था, क्या कर दिया था? मैम कर दिया था. ओके ओके, आपने श्वेता एंड भी ठीक से किया, डोंट वरी अबाउट इट. हेल्प्स नीडी पीपल, राइट. अगर आपने एंड में फिर भी लिखना है तो यू कैन राइट दैट he must be a role model and have admirable morals, right. अगर आपने एंड में देन आप ये दोनों लाइंस के आइडियाज इंक्लूड कर सकते हो. ओके मैम. So wonderful students, those who have sent it already, right. हाँ जी Amandeep, about your yesterday's passage, so you can write human beings nowadays are becoming more dependent on machines since they are it is making our life easier. Yeah, it is making our life more comfortable, right. आप ये Yes, वाली ma'am. लाइन चाहे छोड़ दो that we are becoming very lazy. You can simply write that machines are playing a role everywhere, right from in or they are playing a role in all our daily tasks. तो डेली टास्क से क्लियर हो जाएगा कि जो इसमें पैसेज में था ना, ब्रेकफास्ट, गेटिंग रेडी, गोइंग टू Yes, ma'am. स्कूल, राइट. क्योंकि बेटा इसमें ना कहीं पे ये बात नहीं हुई है, तो जैसे प्रेसी में वी हैव टू स्टिक टू व्हाट पैसेज हैज बीन गिवन. चाहे उससे नो डाउट वट एवर यू आर सेइंग दैट इज ऑल्सो करेक्ट दैट दे हैव अ रोल इन फील्ड, फैक्ट्री, होम, बट हमने वी हैव टू लिमिट आवरसेल्फ टू व्हाट इज गिवन इन द पैसेज. तो आपने उससे बियॉन्ड कोई बात नहीं वहां पे लिखनी पैसेज में, ठीक है, जो आप अपना मतलब शॉर्ट करके लिख रहे हो. तो आप इसमें फिर वही लिख दो कि दे हैव अ रोल टू प्ले इन डेली टास्क and this has led to the fear, or this leads to the fear that one day we might become slaves to machines, right. Okay, wonderful. Thank you, ma'am. So students, those of you who are still writing, आर्यन, अवतार, प्रभदीप, सूरज. हाँ जी, आपका बेटा हो गया. हाँ जी आर्यन. ओके राइटिंग, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, आर्यन बाद में भेज देना. हाँ जी अवतार, व्हाट अबाउट यू? Yes, Avtar, are you still writing? What about Firoz? Oh, फिरोज ने तो चेक करवा लिया, सॉरी.
What about Suraj and Prabdeep? Hanji Suraj, am I audible? मैम हाँ जी, मैम मेरे को क्या बोला था कि मतलब जो भी लाइंस है इसको कॉमा में लिखना है, मतलब वो जो वर्ड्स है लाइन। लेट मी सी। बेटा मैंने आपको कहा था कि हाँ जी आप इसको ना जैसे और शॉर्ट कर सकते हो, जैसे जो आपकी सेकंड लाइन है, तो ही इज वेरी पेनफुल, तो सेंस नहीं बनेगी ना, ही इज वेरी पेनफुल, तो पेनफुल तो आप कट कर दोगे। ही इज वेरी रिलीजियस, रिस्पेक्टफुल, रिलीजियस कॉमा रिस्पेक्टफुल कॉमा knows his हार्ड duties वर्क। and a hard working person। ठीक है, तो ये देखो आपके तीनों सेंटेंस एक सिंगल सेंटेंस बन जाएगा, राइट? यस मैम। अगर आपको अभी भी डाउट है ना, आप इसको रीराइट करके मुझे एक बार भेज दो, फिर मैं चेक कर दूंगी। यस मैम। So I believe Prabdeep has sent his write up. All right, Prabdeep, मैं अभी आपको चेक करके बता ही देती हूँ, so that will be easier. हाँ जी, wonderful. So definition of a good man is one who does not smoke, drink and avoids bad language. So avoids bad language. ठीक है बेटा, यहाँ पे द नहीं आएगा। He has a correct opinion on all subjects and the authority to protect the young. He must be a role model for all. तो बेटा रोल मॉडल फॉर ऑल ठीक है, दैट ही लीड्स द यंग जनरेशन, ये आप चाहे काट दो। हिज मॉरल्स इन द नैरो सेंस मस्ट बी एडमिरेबल, राइट? So Arun, I'll let you know how the passage can be made better, right? अभी बेटा मैं ना आपको टाइम टू टाइम आई ट्राई टू गिव यू passages प्रेसी राइटिंग के लिए, so we can take out time in one of our lectures, just 5-10 minutes, so that you practice in the class itself. So with practice it will be improved, right? And talking about the grammar, so I told you that in the next lab class, first we will begin with a very brief, recap of the grammar, right? And then we will move on to our lab syllabus. All right, so आर्यन आप चाहे बाद में भेज देना। अवतार भी रह गया था, अवतार, अवतार एंड सूरज। So no problem, take your time. Whenever you finish writing, you can just send a picture to me on WhatsApp and I'll get back to you. Right? So इसका solution भी हम देख लेते हैं। The characteristics of a good man are known and is expected to be religiously profound, must not smoke, drink or use bad language. His behavior must be the same for all genders and he is expected to be a role model for the young ones. He must know his duties and avoid taking up the path of sin. He must be good not only in the professional space but also help people in need. He must be someone who can be admired and is praiseworthy. See, now this also seems a bit long. हम इसको तो और भी short कर सकते हैं. And the title is Attributes of a Good Man, right? So ये third वाला passage बेटा मैं ना आपके साथ ये PDF share कर दूंगी. So ये third passage आपने खुद attempt करना है फिर से, right? So whenever you are done, you can just attempt it and you can send your solution, and tomorrow we will discuss it in class. All right, so I'm going to stop sharing the PDF. So Aryan and Suraj, you may send your write-ups to me later. Avatar has, I think, left the class. Well, that is okay. So I hope you don't have any problem. You are comfortable dealing with this topic. Yes, ma'am. बाकी डोंट Yes, वरी, ma'am. देखो प्रैक्टिस के साथ आपका बेटर हो जाएगा, उसकी कोई इशू ही नहीं है। So before your exam, you'll be well prepared and your passage will, your Precis writing will be good. So बच्चे, that will be all. I'll end the class now. See you next time. Till then, you guys take care. Keep attending your classes. All right. Thank you, ma'am. Okay. Have a Thank good you, ma'am. day. थैंक यू मैम।